Hello, good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. सबको साउंड आ रहा है प्रॉपरली? सबको साउंड आ रहा है प्रॉपरली? यस, आई थिंक सो. चलो, तो we'll see the hormonal system from anatomy physiology point of view. We have already seen first part the day before yesterday. परसों ही हमने HAP का ये जो हार्मोनल सिस्टम है उसका एक पार्ट देखा है अपन ने. तो टुडे विल सी द अनदर पार्ट. आई विल आल्सो टेक अ रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर. तो एज आई टोल्ड यू, वेलकम, गुड इवनिंग. यस, तो जो हार्मोनल ड्रग्स है, सो यू हैव वन सेक्शन इन द फार्माकोलॉजी, हार्मोनल ड्रग्स. But before understanding the hormonal drugs, you have to clear your physiology. That is nothing but the anatomy physiology of hormonal system. So read first hormonal system and then go for hormonal drugs. So we are doing same thing. First we will try to understand the hormonal system from HAP point of view, and after completing it, we'll go to the drug acting on hormones or hormonal drugs. So yesterday we have seen what do you mean by yesterday we have seen that what do you mean by homeostasis. So there is one term known as a homeostasis. Homeostasis means that is nothing but the communication between the internal environment. आपके बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, आपके बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट टिश्यू है, डिफरेंट सेल्स है. तो सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कंबाइन होकर सिस्टम बनता है, और पूरे सिस्टम एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं. तो दैट इज नोन एज हीमोस्टेसिस, सॉरी होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनल सिस्टम्स, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंटरनल बॉडी सिस्टम, एंड hemostasis means clotting of blood. There are two different terms, homeostasis and hemostasis, right? So homeostasis means coordination or synchronization of internal system of your body. So homeostasis is maintained by two major system, as I told you in the last lecture कि homeostasis जो है वो maintain कौन करता है. तो there are two system. First system is nervous system. Nervous system will control the homeostasis for short term. तो कुछ शॉर्ट टर्म रेगुलेशन इसका है, नर्वस सिस्टम का है, एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए आपका एंडोक्राइन सिस्टम है. तो दे होम्योस्टेसिस मेजर मेंटेन बाय नर्वस सिस्टम एज वेल एज endocrine system, right? So endocrine system maintains homeostasis for long term period, and nervous system maintains the homeostasis for short term period, remember, okay? Now endocrine system, they act by different endocrine hormones. So hormones are nothing but the messengers. They are the messengers. So they will signal, they will send a message from one cell to another cell. तो एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मीडियम या एजेंट लगेगा ना. जैसे आपको रशिया के साथ में बात करना है, डायरेक्टली पीएम नहीं बात करते, तो पहले एक एजेंट लगता है. तो एजेंट है ना, जैसे GPAT क्लासेस वालों के भी एजेंट होते हैं, है ना. नहीं सर बिजी है, आप बात नहीं कर सकते, है ना. सर कुछ काम नहीं कर रहे, बैठा है सर, लेकिन आप बिजी, एजेंट बोलता है ना. तो एजेंट मीन्स इट इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट, है ना. सेल विल कम्युनिकेट विद अनदर सेल वाया
that is nothing but the messenger. Now that messenger for nervous system is a, you know, that is nothing but the neurotransmitters, and that messenger for endocrine system is nothing but the hormone. So endocrine system have a two type of glands, and there are two type of glands in the body. First one is a exocrine gland and second one is a endocrine gland, right? So exocrine gland means gland with the duct, and they will release their secretion via duct. Endocrine gland means ductless gland, and they will release their secretion directly into the blood. We have seen this. Now the hormones, they are regulated by negative feedback mechanism. You have to remember, most of the hormones they are regulated by negative feedback mechanism. इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. Most of the hormones they are regulated by negative feedback mechanism, है ना, except your oxytocin. तो oxytocin जो होता है that is regulated by, oxytocin is regulated by positive feedback mechanism. Oxytocin क्या है? Hormone of posterior pituitary. Now what do you mean by negative feedback or feedback mechanism? So in there are a source cell in the endocrine system and there is a target cell. तो एक जगह से क्या है? सोर्स सेल होता है. सोर्स मतलब क्या? जहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होता है. टारगेट सेल मतलब क्या? जहाँ पे हार्मोन एक्ट होगा. सोर्स सेल विल प्रोड्यूस हार्मोन and it will act on a target cell. Will produce a hormone, will act on a target cell. Now जैसे ही सोर्स सेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो ब्लड में से टारगेट सेल में जाता है. टारगेट सेल का फिजियोलॉजी चेंज करता है. वो जो मैसेज है चेंज इन द फिजियोलॉजी, वो कहाँ पे आ जाता है? जैसे सोर्स में आ जाता है. दैट इज नोन एज द मैसेज और फीडबैक. So most of the hormones they are regulated by feedback mechanism, mostly negative feedback mechanism, and there is one hormone oxytocin which is regulated by positive feedback mechanism, right? We have seen the different organs for endocrine system. So different endocrine glands we have seen pituitary gland, then pineal gland is there, thyroid, parathyroid glands are there, then thymus is there, adrenal glands are there, pancreatic islets of Langerhans, they are having endocrine function, then ovary and testis in the males. So these are the major endocrine glands. Okay, we have seen this in a last lecture, but I am taking in a rapid manner as a revision. After that we have seen the hormonal introduction. So as I told you, physiological system in physiological activities in the body regulated by two mechanisms. That is, first one is a nervous mechanism and second one is a endocrine mechanism. So endocrine glands, they are surrounded by a network of capillary and which allows the secretion of endocrine gland to be diffused into blood, Now this hormone is nothing but the chemical messenger which will send us message from one cell to another cell. We have seen the endocrine gland, we have seen the exocrine gland, right? Now organs of endocrine function, we have seen main organs. There are main organs which will produce a hormone like a hypothalamus. Hypothalamus actually it is a organ of brain. Hypothalamus is a part of brain. Hypothalamus क्या है? Brain का part है, but it also has a some endocrine function. Hypothalamus is also having endocrine function, as hypothalamus will release some controlling hormones for the pituitary gland. जो hypothalamus है वो brain का part होता है actually, but इसको endocrine function भी है. क्या function है इसको? endocrine function. It will produce a hormone which will control the release of pituitary hormones. Yeah, so it has a controlling function. Then pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, pancreatic islets, then ovaries, testis and placenta. These are the different main endocrine glands. But there are certain other tissues or glands which has another function, but they also have a endocrine function. They are known as a tissue or glands with a secondary endocrine function. जैसे आपका thymus gland है, heart, stomach, adipose tissue, kidney. Because ये जो stomach है, kidney है, adipose tissue है, heart है, they will also produce some hormones known which are having endocrine function. So that's why they are known as a tissue or glands or organs with the secondary endocrine function. ठीक है, चलो fast. Now regulation of hormones, as I told you,
Most of the hormones, they are regulated by negative feedback mechanism, and oxytocin is regulated by positive feedback mechanism. इसके ऊपर multiple times question आ चुके हैं, right? So जैसे for example, examples of one example of negative feedback mechanism, that is nothing but the regulation of cortisol enzyme, regulation of cortisol hormone. It is adrenocorticotropic hormone या adrenocorticotropic hormone होता है, और उसका रेगुलेशन कैसे होता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से. कैसे? फॉर एग्जांपल, सपोज योर बॉडी इज अंडर इमोशन, और योर बॉडी इज हैविंग स्ट्रेस, ट्रॉमा, or there is a disturbance in the cardiac, there is disturbance in the circadian rhythm. So that emotion, stress, trauma, or disturbance in the circadian rhythm stimulate the hypothalamus. Hypothalamus will release one hormone. Hypothalamus will release one hormone known as a corticotropin releasing hormone, CRF. Corticotropin releasing hormone will act on a pituitary gland, and it will stimulate the pituitary gland to produce a hormone known as adrenocorticotropic hormone, ACTH, and it will act on adrenal cortex. And will produce a cortisol. है ना? Adrenal cortex will produce cortisol. So cortisol जैसे बनेगा, है ना, तो वो it is a stress boosting hormone, है ना. तो cortisol will show its action, will relieve your stress, will relieve your trauma, and trauma मतलब क्या? Cortisol is having anti-inflammatory activity, है ना. So it will relieve your emotion, stress, trauma. So that signal is sent to the anterior pituitary as well as hypothalamus to stop, है ना. जैसे ही cortisol रिलीज होगा, आपका trauma, emotion वो सब क्लियर हो जाएगा, और वो cortisol का जो मैसेज है वो anterior pituitary को जाएगा कि cortisol रिलीज हो चुका है, वो अभी रिलीज करेगा trauma हो गए, है ना. तो anterior pituitary will stop the producing ACTH, hypothalamus will stop the producing CRF. That is known as a negative feedback mechanism. ठीक है. Now overview of actions of these hormones. So these hormones कैसे act होते हैं? ये hormones कैसे act होते हैं? So mechanism of action of hormone. These hormones, they act via receptor. Hormones act via receptor. So we have seen in the pharmacology different type of receptor. Receptors we have seen in the pharmacology. There are 4 type of receptor. कितने? 4 type of receptor. कितने receptor होते हैं? 4, है ना. Type 1 ion channel, Type 2 GPCR, Type 3 जो होता है enzyme receptor, Type 4 is intracellular receptor. So hormones act via receptor, and mostly they act via Type 3 and Type 4. तो Type 3 receptor होता है आपका, मतलब enzyme receptor, and Type 4 जो होता है. Type 4 कौन सा होता है ना. Type 4 कौन सा होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बोलो मुझे. Type 4 रिसेप्टर कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में बोलो. तो Type 4 रिसेप्टर इज नोन एज न्यूक्लियर रिसेप्टर. So hormones mostly act via nuclear receptor or act via enzyme receptor, right? So released hormone act on a receptor, and mostly they regulate the growth and metabolism of cell and tissue. तो हार्मोन्स का काम क्या है? What is the role of hormone? So they regulate the cell growth and metabolism. Main role of hormone is to regulate the cell growth and metabolism. Now their level in the blood, जो हार्मोन का लेवल होता है ब्लड में, that is maintained within a particular range. Levels of hormone in the plasma maintained in a particular range, है ना. And they are self-regulated, controlled by negative feedback mechanism or respective controlling hormones. जैसे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके कुछ हार्मोन्स कंट्रोल किए जाते हैं. किससे? हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस से क्या होगा? हाइपोथैलेमस से few hormones will be released known as controlling or inhibiting hormones, and the hormones will control the pituitary gland production. Right? Now messengers जो है, messengers means it is a agent, it is a chemical which is used to share a message from one cell to another cell. So communication between the cell,
communication between the cell is known as the cell signaling. Remember, communication between the cell is known as cell signaling, and that occurs via chemical messengers. So that occurs via chemical messengers. Even your hormones are nothing but the messengers. But जो endocrine hormones है, endocrine hormones, they are known as the classical hormones because they are released by endocrine glands. But there are other hormones also, for example local hormones. So that's why local hormones like prostaglandin, histamine, serotonin, bradykinin, they are known as the local hormones. They are released from other tissues. Classical hormone जब term आता है तो that is mean hormone produced by endocrine gland, right? Now that these messengers, they are classified, they are divided into different types. The first one is endocrine messenger, second one is a paracrine messenger, third one is a autocrine messenger, fourth one is a neurocrine messenger, fifth one is a neurohormone. So these messengers, they are divided into these 5 types. Endocrine means what? The endocrine messenger means simply your endocrine hormones. They are nothing but the chemical messengers, and they are produced by endocrine gland. तो जो एंडोक्राइन मैसेंजर होता है उसको ये हार्मोन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से आता है. जैसे इंसुलिन हो गया, आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है. एग्जांपल, पैराक्राइन मैसेंजर मीन्स व्हाट? पैराक्राइन मैसेंजर मीन्स लोकल हार्मोन्स जो टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं लोकली, जैसे हिस्टामाइन वगैरह. तो दे आर आल्सो नोन, पैराक्राइन हार्मोन्स आर आल्सो, और पैराक्राइन मैसेंजर्स आर आल्सो नोन एज जेक्स्ट्राक्राइन मैसेंजर्स, राइट. याद रखना है, पैराक्राइन मैसेंजर्स आर आल्सो नोन एज जेक्स्ट्राक्राइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिनोनिम्स आर इंपॉर्टेंट. पैराक्राइन को ही क्या बोलते हैं? पैराक्राइन को ही बोलते हैं अपन जेक्स्ट्राक्राइन मैसेंजर्स. दे आर द केमिकल मैसेंजर्स अगेन रिलीज फ्रॉम लोकल टिश्यू एंड विच विल गेट डिफ्यूज्ड इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड विल प्रोड्यूस इफेक्ट. जैसे आपका हिस्टामाइन, हिस्टामाइन क्या करता है? हिस्टामाइन इज रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल in the surrounding tissue and produces the inflammation, ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? again released from tissues and produces the pain and inflammation. So they are paracrine messengers. Messengers are endocrine, messengers are either paracrine, messengers are either autocrine. Autocrine मतलब क्या है? They are known as the intracellular chemical messengers. Intracellular chemical messengers. They control their own release. They will inhibit the source cell. Say leukotrienes होता है, they are autocrine messengers. Then again messengers are neurocrine messengers. Neurocrine messengers मतलब क्या? जो नर्वस सिस्टम से मैसेंजर निकल रहा है वो, तो उसको बोलते हैं अपन न्यूरो ट्रांसमीटर. न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे डोपामाइन हो गया, एसिटिलकोलिन, एड्रेनालिन, they are the neurotransmitter. They will transmit a signal, they will transmit a message from one neuron to another neuron. Then fifth होता है आपका मैसेंजर का टाइप. फिफ्थ टाइप ऑफ मैसेंजर इज नथिंग बट द न्यूरो हार्मोन. अभी देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द न्यूरोक्राइन, है ना. न्यूरोक्राइन को अपन बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. न्यूरोक्राइन को क्या बोलते हैं अपन? वो टाइप 4 जो है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर. Neurotransmitter. Neurocrine messenger is also known as a neurotransmitter. Neurotransmitter, right? But what is the difference between neurotransmitter and neurohormone? है ना. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे इवन टीचर लोगों को पता नहीं difference between neurotransmitter and neurohormone. These two terms they are roughly used parallelly. Okay, कि बहुत सारे लोग न्यूरोट्रांसमीटर को ही न्यूरो हार्मोन बोलते हैं और न्यूरो हार्मोन को ही न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, पर दे आर डिफरेंट, ठीक है. व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोक्राइन मैसेंजर इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे डोपामाइन, एसिटिलकोलिन, एड्रेनालिन. बट न्यूरो हार्मोन क्या होता है? न्यूरो हार्मोन इज रिलीज्ड बाय नर्व सेल डायरेक्टली इनटू द ब्लड. इस न्यूरोट्रांसमीटर दे आर नॉट रिलीज्ड इन द ब्लड. इनका और ब्लड का कोई संबंध नहीं है. ये न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में रिलीज होंगे, या फिर न्यूरॉन से डायरेक्टली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होंगे. मतलब न्यूरॉन से रिलीज होंगे और डायरेक्टली एक्ट ऑन अ इफेक्टर सेल, है ना. ब्लड का कोई संबंध नहीं इसमें. दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर. बट न्यूरो हार्मोन मीन्स व्हाट? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय नर्वस सेल. They are produced by nerve cell, but they are released in the blood. They are released in the blood, and they are known as a
न्यूरो हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, एंटी डायरेटिक हार्मोन हो गया, है ना, एंड कंट्रोलिंग हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, दे आर आल्सो नोन एज अ न्यूरो हार्मोन्स। तो यहाँ पे आपको न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो ट्रांसमीटर का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंट्राजोनल, करेक्ट है आपका राहुल दास, यू आर करेक्ट। टाइप 4 को अपन न्यूक्लियर बोलते हैं, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, तो हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या है, क्या प्रोटीन है वो या फिर कार्बोहाइड्रेट है ना, हम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड से क्या है। सो हार्मोन्स के नेचर, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दे आर स्टेरॉयडल इन नेचर। जैसे आपके गोनेडल ऑर्गन जो है ना, जो सेक्स हार्मोन है आपके, दैट इज अ स्टेरॉयडल इन नेचर, क्योंकि उसमें स्टेरॉयड रिंग होता है। जैसे अल्डोस्टेरॉन, देन एंड्रोजन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे आर स्टेरॉयड इन नेचर, दे आर स्टेरॉयड इन नेचर। हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन का कौन सा है हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना, देन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, एंटी डायबिटिक हार्मोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, है ना, पैराथॉर्मोन, देन कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीपी, है ना, मतलब पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, सोमेटोस्टैटिन, दे ऑल आर प्रोटीन इन नेचर। ये क्या है, प्रोटीन, मतलब ये पेप्टाइड होंगे, उसमें अमीनो एसिड्स होंगे, ये सब क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, और इनका अमीनो एसिड एज अ मोनोमर रहेगा, अमीनो एसिड के ये पॉलीमर रहेंगे, कौन, ये सब, है ना। देयर आर सम हार्मोन विच आर डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, जैसे आपका थायरोक्सिन हो गया है ना, थायरोक्सिन बोलते हैं T4 मतलब थायरोक्सिन, T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन, देन एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। कौन सा, टायरोसिन। ये सब क्या है, थायराइड हार्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये सब दे आर द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। कौन सा, टायरोसिन, याद रखना है आपको, कौन सा सिन, टायरोसिन, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड, राइट। नाउ जहाँ पे मैंने बोला था कि एंडोक्राइन मैसेंजर्स, जैसे ये सेल है ना, सेल इन द एंडोक्राइन ग्लैंड विल प्रोड्यूस सम मैसेंजर, दैट मैसेंजर विल गो इनटू द ब्लड and will act on a target cell, right? So endocrine messenger. Then paracrine messengers, they are local messengers released from one cell and they get diffused into interstitial fluid and act on another cell. This is histamine, prostaglandin. Neurocrine messenger मतलब न्यूरोट्रांसमीटर ना, तो ये जो है ना, ये जो न्यूरॉन का पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट, फ्रॉम दैट न्यूरोट्रांसमीटर विल बी रिलीज एंड इट विल एक्ट ऑन अ रिसेप्टर और इट विल एक्ट ऑन अ टारगेट सेल। जैसे यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा ये नेम, तो न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। देन एटोक्राइन मैसेंजर्स मीन्स व्हाट, दे आर सेल्फ रेगुलेटेड हार्मोन्स, so they will released from that cell and they will control that cell, है ना, they will control the source, that is known as a autocrine messenger. Paracrine messenger मतलब क्या है, also known as juxtacrine messengers, and है ना, diffuse through a gap junction between the cell, एक सेल से रिलीज होगा, दूसरे सेल को एक्ट करेगा, लेकिन between the gap of junction। न्यूरोक्राइन मैसेंजर मतलब क्या, न्यूरो हार्मोन्स, है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द नर्वस सिस्टम, जैसे ये न्यूरॉन, एंड दे आर रिलीज्ड इन द ब्लड, ट्रांसपोर्ट थ्रू ए ब्लड एंड देन दे विल एक्ट ऑन अ टारगेट सेल, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन कैसे होता है, कैसे एक्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ, तो एज आई टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दे एक्ट वाया रिसेप्टर। जो हार्मोन होते हैं वो किससे एक्ट होते हैं, रिसेप्टर के थ्रू, एंड मोस्टली टाइप 3 एंड टाइप 4 रिसेप्टर, टाइप 3 टाइप 4 रिसेप्टर, राइट। बट सम हार्मोन्स आल्सो एक्ट वाया टाइप 2 रिसेप्टर, जो सरफेस रिसेप्टर होते हैं, है ना, जैसे टाइप 1 जो है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, टाइप 2 GPCR, तो ये सरफेस के ऊपर होते हैं। टाइप 3 भी थोड़ा सा सरफेस के ऊपर होता है एंड इंटरनल पे होता है। तो टाइप 1 टाइप 2 दे आर नोन एज सरफेस रिसेप्टर। जैसे आपका एड्रेनालिन और एड्रेनालिन वगैरह ये जो है
these hormones they act on a surface receptor, you know, protein, hormones and catecholamines, and they will produce a secondary messengers. This is cyclic AMP, cyclic GMP, inositol 3-phosphate, DAG, and they will either activate or inactivate the enzyme, and right. But most of the hormone they act on a type 3 type 4 receptor, you know, type 3 type 4 receptor, you know, this is a nuclear receptor type 4. So these hormones they act on a nuclear receptor, and they will cause the replication of DNA, transcription, you know, transcription means production of mRNA, and then they will cause translation, they will synthesize the protein this. So that's why जो type 4 receptor होता है उनको बोलते हैं अपन receptor that regulate the gene transcription. So hormones act on a type 4 receptor, and they will regulate the gene transcription. They will regulate the gene transcription. They will alter the protein synthesis. They will alter the gene. Now next part. So in the detail, if you want to learn that mechanism of hormone, so you can read from the books, but that is not important as per my knowledge for the GPAT, right? So यहाँ पे देखा है कि they will, है ना, once they will attach to the receptor, they will increase or decrease the protein synthesis, और they will उनके लिए बहुत सारा सेकेंडरी मैसेंजर्स होता है, जैसे एडेनिल साइक्लेस कुछ एक्टिवेट करता है, सब डिटेल में दिया है. Now we have seen the anterior pituitary hormones, है ना, different hormones produced by endocrine gland. तो याद रखना है anterior pituitary hormones. Pituitary gland is known as a master gland, and it is divided into two part. Is divided into two part. में दो part होता है, एक होता है anterior pituitary, एक होता है posterior. So what are the hormones of anterior? Remember यहाँ पे growth hormone है ना, thyroid stimulating hormone, ACTH मतलब adrenocorticotropic hormone, follicular stimulating hormone, luteinizing hormone, and prolactin. So there are 6 hormones, and there are 6 hormones which are known as a anterior pituitary hormone. Out of that, remember these five are, है ना, first 5 hormones they will control the release of another hormones. They will act on another endocrine gland, you know. These 5 hormones they will act on another endocrine glands, and they will control the production of another hormones. And that's why these top 5 hormones they are known as tropic hormones. इनको ट्रॉपिक बोलते हैं. ग्रोथ हार्मोन इसको बोलते हैं सोमाट्रोपिक हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमाट्रोपिक हार्मोन. क्यों ट्रॉपिक बोलते हैं? बिकॉज दीज 5 हार्मोन्स दे विल कंट्रोल द अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड. जैसे फॉर एग्जांपल follicular stimulating hormone will control the ovary will control the testes. So that's why they are known as a tropic hormone. So they are known as a gonadotropic hormone. The follicular stimulating hormone जो है luteinizing hormone, gonadotropic hormone ना. देखो adrenocorticotropic, tropic क्यों बोलते हैं इनको? Tropic because they control the another gland, right? So thyroid stimulating hormone will control the thyroid gland. Growth hormone also known as somatropic hormone. So you know, so they are the tropic hormone. But last prolactin is not tropic hormone, है ना. यहाँ पे ये concept याद रखो. What are the example of posterior pituitary hormones? There are 2, and ADH and oxytocin. बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं रहता, तो बाकी याद मत करो. No need to remember this, just remember these. तो दो याद रखो, ADH and oxytocin, they are posterior. बस इतना रखो, ADH and oxytocin, they are the posterior. ऑटोमेटिकली आपको anterior समझ में आएगा. बस पोस्टेरियर हार्मोन्स जो है याद रखो, है ना. तो एंटीरियर वाले समझ में आएंगे कि बस ADH एंड ऑक्सीटोसिन ये एंटीरियर नहीं है, मतलब ये पोस्टेरियर है. बाकी मग ACTH क्या है? एंटीरियर है. FSH क्या है? एंटीरियर. LH, GH, प्रोलैक्टिन ऑल आर द एंटीरियर. और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन से? थायरोक्सिन. थायरोक्सिन को बोलते हैं अपन T4.
T4 मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T4 मतलब क्या होता है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। सेकंड हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थर्ड वन इज कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन है ना। नो पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन क्या करता है? विल रेगुलेट द सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन स्लीप साइकिल। Parathyroid hormone will reduce parathyroid. Then pancreatic islets will release the insulin, है ना। आपको मालूम है बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स, सोमेटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स ये क्या है? बीटा सेल्स, देखेंगे बाद में। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। नाउ एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कौन से? हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, है ना। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स विल प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ हार्मोन, है ना। 3 टाइप ऑफ हार्मोन। फर्स्ट वन इज अ glucocorticoid. In that main one is a glucocorticoid में main कौन सा है? cortisol and corticosterone. Then second type is nothing but the mineralocorticoids. तो mineralocorticoids में main है aldosterone and 11-deoxycorticosterone. Then third one is the sex hormone which are nothing but the androgens. Androgens में आएगा आपको testosterone, estrogens, है ना। Then progesterone में आएगा progesterone, progesterone, estrogen, they are known as the female hormones. Adrenal medulla will produce catecholamines, adrenaline or adrenaline dopamine. They are the catecholamines. Right? Now again you see there are different organs which also has a endocrine function, secondary organs, है ना। hormones organs, second organs having secondary endocrine function. तो उसमें आपका और एक मेन pineal gland रह गया। तो pineal gland will produce melatonin, है ना। थाइमस विल प्रोड्यूस थाइमोसिन एंड थाइमिन। किडनी के भी हार्मोन्स होते हैं, कल मैंने बोला था। किडनी विल प्रोड्यूस फ्यू हार्मोन्स एंड उसके ऊपर वो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स। व्हाट आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय किडनी? तो रिमेंबर एरिथ्रोपोएटिन विल रेगुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन, थ्रोम्बोपोएटिन विल रेगुलेट द प्लेटलेट प्रोडक्शन, रेनिन विल रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ योर दैट, है ना, एंजियोटेंसिनेज, है ना। वो जो है आपका इनएक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। देन कैल्सिट्रायोल इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हार्ट में हार्ट विल प्रोड्यूस एपीएन, एएनपी। एएनपी मतलब क्या? एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड, एएनपी, एन। एएनपी कहाँ पे आता है आपको? तो एएनपी एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड यू विल फाइंड इन द व्हेन यू विल सी एंजाइना पेक्टोरिस, जो आपका ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें ये, है ना। एएनपी, बीएनपी एंड सीएनपी, दीज 3 आर द एएनपी, बीएनपी एंड सीएनपी, है ना। देन प्लासेंटा विल प्रोड्यूस अ ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी, दैट इज यूज्ड फॉर द दैट इज यूज्ड इन द प्रेगनेंसी किट। तो प्रेगनेंसी किट होता है उसमें यूज होता है। तो प्रेगा न्यूज वगैरह जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द एचसीजी, प्रेगा न्यूज। देन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। देन लोकल हार्मोन्स तो मैंने बोला आपको, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइंस, लिपोक्सिन, एसिटिकोलिन, बाकी ये हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, सब्सटेंस पी, हिपेरिन, ब्रैडिकाइनिन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन। जीआईटी में डिफरेंट हार्मोन होता है, जैसे जीआईपी, जीआईपी intestinal peptide, GIP, VIP, vasoactive intestinal peptide, GIP, VIP, then gastrin. These are the hormone produced by stomach. You have already seen this, I'm just repeating. Now ये जो हार्मोन्स है ऑलरेडी वी हैव सीन, तो ये मैं नहीं ले रहा हूँ स्लाइड, ये भी अपन ने देखा है, नहीं ले रहा हूँ स्लाइड, राइट। नाउ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नथिंग बट द ए पी शेप्ड ग्लैंड। आपको जो पी होता है, एक आपका, है ना, ग्रेन होता है पी, पी शेप्ड ग्लैंड, एंड it is weighing around the only 0.5 to 1 gram, right, 0.5 to 1 gram. So it has a two part. One part is known as a
one part is known as a anterior pituitary. This red part जो है that is known as anterior pituitary. Anterior pituitary, AP से शॉर्ट में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, anterior pituitary, and it is also known as adenohypophysis. Anterior pituitary को बोलते हैं adenohypophysis, है ना. And second part is a posterior pituitary, है ना, posterior pituitary. Anterior pituitary known as adenohypophysis, posterior pituitary known as a neurohypophysis. इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं और एडिनोहाइपोफाइसिस इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का, राइट. So these are the different parts of adenohypophysis. Means parts of anterior pituitary कौन से, pars tuberalis, then pars distalis, pars intermedia, and then parts of your posterior pituitary is nothing but the that infundibular stem and pars nervosa. तो ये एंटीरियर ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड is nothing but the pear-shaped gland present in the nearby to hypothalamus or ventricles in the brain that will produce different hormones. That will produce 8 hormones. But now recently one more is discovered. So the gland will produce 9 hormones. So 6 जो है anterior pituitary will produce 6 hormones, है ना. जो anterior part जो है anterior pituitary that will produce 6 hormones, है ना. Anterior pituitary is also known as adenohypophysis. Posterior pituitary will produce 2 hormones known as a neurohypophysis. Posterior part जो है उसको neurohypophysis बोलते हैं, anterior को adenohypophysis. Now most of the hormones produced by anterior part of pituitary, they are controlled by hormones produced by hypothalamus. So hypothalamus will control the most of the hormones of anterior pituitary. Posterior के नहीं होते, because posterior pituitary is a part of nervous system. Posterior pituitary is a part of nervous system. That's why it is known as neurohypophysis. तो देखो यहाँ पे है ना, as I told you, adenohypophysis. So the hormones produced by anterior pituitary gland is controlled by hormones of hypothalamus. Because जो भी hypothalamus जो है उसमें से जो controlling hormones है, controlling hormones from hypothalamus will be released into the surrounding capillaries, and that circulation of anterior pituitary is done by superior hypophyseal artery. Superior hypophyseal artery जो है वहाँ से ब्लड, जो हाइपोथैलेमस से ब्लड आता है वो डायरेक्टली कहाँ पे आता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी. सो दैट्स व्हाई दैट्स हाउ दैट इज नोन एज हाइपोफिशियल सर्कुलेशन, है ना, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल सर्कुलेशन. ये जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज हाइपोथैलेमस, है ना, नोन एज हाइपोफिशियल हाइपोथैलेमिक सर्कुलेशन. एंड जो हाइपोथैलेमस से जो कंट्रोलिंग हार्मोन्स है, they are released and they will control the production of that anterior pituitary hormones. Then for the posterior pituitary, you can see this shown by blue. So that is a part of nervous tissue. That's why neurohypophysis. Neurohypophysis क्यों बोलते हैं neurohypophysis posterior pituitary को? Because वो किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है. एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है. ठीक है. इन द डिटेल इफ यू वांट टू सी द हिस्टोलॉजी ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यू कैन रीड दैट बुक नोन एज मेडिकल फिजियोलॉजी बाय सेबुलिंगम. बट एज पर माई नॉलेज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर जीपैट. जीपैट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उतना हम ले रहे हैं और उससे ज़्यादा ले रहे हैं. ठीक है.
So if you want to study more, you can read from that book. Okay. Before that, how there is a regulation of growth hormone secretion. देखो, growth hormone is regulated by, है ना, one growth hormone is regulated by hypothalamic hormone. जो hypothalamus में एक hypothalamus will produce one hormone known as a growth hormone releasing hormone that will control the production or that will regulate the production of growth hormone. पर growth hormone कब रिलीज होता है? तो इसका नाम जैसे growth hormone है, तो ऑब्वियसली उसका फंक्शन क्या रहेगा? ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन, माइटोसिस, मायोसिस, देन आपके जो हड्डियाँ है, आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज है, वो सबका ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? तो उसके लिए तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस भी बहुत इजी है, आपको याद रखना. उसके नाम में रखा है. आप बोलते हो ना नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा होता है ना, अपन देखेंगे. बट बिफोर दैट रिलीज हाउ देयर इज रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. तो इफ यू गॉट हाइपोग्लाइसीमिया, इफ यू गॉट हाइपोग्लाइसीमिया और, है ना, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और ट्रॉमा, तो ये कंडीशन में क्या होता है? hypothalamus gets stimulated. Hypothalamus will release one hormone known as a growth hormone releasing hormone, and growth hormone releasing hormone will stimulate the pituitary gland, anterior pituitary to produce a growth hormone. This growth hormone is produced, it will release in the blood, it will come to the liver, and other tissues. Growth hormone is also known as a somatomedin. Growth hormone is also known as somatotropic hormone. Somatropic hormone. So somatropic hormone, the actions of somatropic hormone is mediated by this one protein known as somatomedin. Somatomedin क्या है? एक प्रोटीन होता है, and you can say it is a receptor for growth hormone, somatomedin. And जैसे ही somatomedin action दिखाता है, तो signal is sent to hypothalamus to stop the growth hormone releasing hormone, है ना. So that is known as the growth hormone inhibiting hormone. अगेन जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, वो सेल पर मैसेज देता है, अगेन सेम थिंग के लिए. जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, वो स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को टू रिलीज द इनहिबिटरी हार्मोन. ठीक है. एंड अगेन सोमेटोमेडिन ये अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल करता है इसके लिए कि इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन. आपका काम हो गया, भी बंद करो प्रोडक्शन ना. तो दैट इज नोन एज द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ठीक है. तो नेक्स्ट देखते डिफरेंट हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देयर फंक्शन. इन शॉर्ट आपकी जीपैट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना, है ना, कि हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देयर फंक्शन, है ना. फंक्शन क्या है, रेगुलेशन कैसे होता है. नाउ फर्स्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज नथिंग बट द ग्रोथ हार्मोन. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन? दोस्तों देखो यहाँ पे, है ना, व्हाट इज रोल? इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ माइटोसिस, सेल डिवीजन करता है ना. इंक्रीजेज द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट इन द सेल, सब ग्रोथ के लिए, है ना. जिसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन. नाम में क्या रखा है? नाम में सब कुछ रखा है, ग्रोथ हार्मोन. तो किसका ग्रोथ करेगा भाई? सेल का करेगा, टिश्यू का करेगा, ऑर्गन का करेगा, है ना, सिस्टम का करेगा, आपके पूरे हड्डी का करेगा, आपके पूरे टिश्यूज का करेगा. मतलब ये ग्रोथ हार्मोन क्या है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. ग्रोथ हार्मोन क्या है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी. तो ये बोलता है माँ का, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल. तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? सबका ग्रोथ करता है ना. सबका ग्रोथ कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन. सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ माइटोसिस, इंक्रीजेज द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट इन द सेल, इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीजेज द यूज ऑफ लिपिड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. इन शॉर्ट, ठीक है. तो ग्रोथ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है ना. सो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. बट इनहिबिट करने वाला कौन है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, है ना. देयर इज वन मोर नोन एज ग्रोथ हार्मोन
रिलीजिंग फैक्टर GHRF ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, वो भी हाइपोथैलेमस से आता है. दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ हार्मोन. मतलब growth hormone releasing hormone and growth hormone releasing factor, these two are the stimulate, they are the having stimulation for the anterior pituitary, but growth hormone inhibiting hormone will inhibit, उसको बोलते हैं अपन somatostatin. Now second hormone of anterior pituitary is nothing but the thyroid stimulating hormone. अगेन नाम में क्या रखा है, नाम में सब कुछ रखा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा. कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका काम क्या है भाई? व्हाट इज द फंक्शन? इट विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस अ थायराइड हार्मोन. सो थायराइड ग्लैंड विल प्रोड्यूस थायरोक्सिन, है ना, एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन. So TSH will stimulate the thyroid gland to produce T4, T3, and that is controlled by hypothalamic thyroid regulating hormone. Now adrenocorticotropic hormone ACTH, adrenocorticotropic hormone. तो जैसे मैंने पहले बोला है कि ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, FSH, है ना, LH, ये जो 5 हार्मोन्स है, दे आर नोन एज ट्रॉपिक हार्मोन्स. क्यों ट्रॉपिक बोलते हैं? बिकॉज दे विल कंट्रोल अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड, बट दे आर नोन एज ट्रॉपिक हार्मोन. बट जो लास्ट वाला है आपका, है ना, प्रोलैक्टिन, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक. देखो, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, that is produced by anterior pituitary, will increase the secretion of cortisol by acting on adrenal cortex, and it is controlled by corticotropic releasing hormone from hypothalamus. Hypothalamus corticotropic releasing hormone. Now next is the prolactin, है ना. प्रोलैक्टिन नाम में क्या रखा है? नाम में सब कुछ रखा है ना, नाम में रखा है सब कुछ. प्रोलैक्टिन, प्रो मुझे क्या है? प्रो मतलब क्या है? प्रो मतलब उसकी साइड लेने वाला. बोलते हैं ना, वो प्रो मोदी गवर्नमेंट वाला बंदा है, मतलब मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला बंदा है. ये प्रो कांग्रेस है, मतलब ये कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला है. तो प्रो लैक्टिन मतलब क्या? लैक्टिन मतलब कैसे आता है आपको? लैक्टोज आता है. लैक्टोज कहाँ पे आता है? मिल्क में आता है. तो प्रोलैक्टिन मतलब क्या? ये मिल्क को सपोर्ट करने वाला एंजाइम है, तो भाई मिल्क रिलीज करेगा. तो प्रोलैक्टिन इज नथिंग बट द hormone of anterior pituitary which will stimulate the production of milk by mammary gland. जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड होता है, तो वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन का काम किसका है भाई? प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन विल प्रोड्यूस और स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क by the mammary gland, and that is regulated by hypothalamic prolactin releasing hormone which will stimulate the production of prolactin, and there is one prolactin inhibiting hormone from hypothalamus which inhibit the secretion of prolactin. Okay? Now next होता है follicular stimulating hormone. कौन सा भाई? follicular stimulating hormone. कौन सा? FSH ना, follicular stimulating hormone FSH. follicular stimulating hormone, so it is a gonadotropic hormone. क्या है ये? gonadotropic hormone. कौन सा ट्रॉपिक? gonadotropic. अरे कौन सा टॉपिक भाई? gonadotropic, है ना. So it will act on a gonads. It will act on a male and female sex organs. So gonadotropin. So it will act in a woman, है ना. जो वुमेन्स में क्या है, फीमेल्स में क्या है, so है ना, sorry, it will stimulate the growth of ova in ovarian follicles. तो जो फीमेल में ओवुलेशन होता है, that is stimulated by follicular stimulating hormone. So FSH, it will stimulate the formation of ova in ovarian follicle, and it will also stimulate to secrete the estrogen by follicles, and in the males it will stimulate the spermatogenesis in the testes. तो follicular stimulating hormone का क्या काम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है, यहाँ पे स्टिमुलेशन है, इनहिबिशन नहीं है. करेक्ट करके मैं नोट्स आपको बाद में अपलोड कर दूंगा इसमें एप्लीकेशन में. आई विल अपलोड दिस नोट्स बाय करेक्टिंग दिस थिंग्स इन एप्लीकेशन. तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट
will stimulate the growth of ovum in the ovarian follicle and also stimulate the release of estrogen by same. Males में it will stimulate the spermatogenesis in the testes. Now this hormone is controlled by hypothalamic gonadotropin releasing hormone. Hypothalamic gonadotropin releasing hormone. So stimulate the release of follicular stimulating hormone. And inhibin, there is one more enzyme known as there is one more hormone from hypothalamus known as inhibin, which inhibit the secretion in the ovaries and testes. Now luteinizing hormone, कौन सा hormone? Luteinizing hormone, also known as a luteinizing hormone, and in the males it is known as a interstitial cell stimulating hormone, ICHS. क्या है ICSH? मतलब क्या है? Interstitial cell stimulating hormone. So what is the role of luteinizing hormone? Function क्या है इसका? So in the women's or in the female, it causes the ovulation and rupturing of ovarian follicle to become a corpus luteum and also release the progesterone from corpus luteum. In the female, it causes the ovulation and rupturing of ovarian follicles. In the males, it increases the secretion of testosterone by the interstitial cells of testes. तो luteinizing hormone का काम क्या है? In the males, testosterone release करना interstitial cell से. That's why it is known as a interstitial cells stimulating hormone. In the main में luteinizing hormone मेन में अगर है तो उसको बोलते हैं अपन ICSH, और फीमेल में तो उनको luteinizing hormone बोलते हैं. In the female, ovulation and rupturing of ovarian follicle to become a corpus luteum and release of progesterone, controlled by hypothalamic growth hormone, hypothalamic gonadotropin hormone releasing hormone. Now we'll see the next part. Next one is nothing but the I hope I am audible to you and you are getting after completion 10 notes. Obviously ये जो है एप्लीकेशन में नोट्स मिलेंगे आपको उसको. ठीक है, देखो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स जो है उसमें का ये पॉइंट आपको पूछ सकते हैं ना कि कौन से हार्मोन का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, कि कौन सा हार्मोन में कितना अमीनो एसिड्स है. इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस देखे पेपर्स में. सो केमिकल नेचर, हाफ लाइफ एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन द डिफरेंट हार्मोन्स. मतलब है ना. So there are 6 hormones produced by anterior pituitary. कितने हैं? 6 hormones produced by anterior pituitary gland. एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट जो है उसके कितने हार्मोन्स है? 6 हार्मोन्स. आउट ऑफ दैट 6 हार्मोन, फर्स्ट 5 हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट luteinizing that stimulate the other endocrine gland and that's why they are known as a tropic hormone. मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, tropic hormone. Now instead of luteinizing hormone in the males, so luteinizing hormone in the male known as a इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना. एंड रिसेंटली एक नया हार्मोन है ना, बीटा लियोपोट्रोपिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी. ये एक नया है, देखो आपको बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलेगा. ये सब कंटेंट 2-4 बुक्स रेफर करके बंदा. बीटा लियोपोट्रोपिन इज अनदर हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. तो एंटीरियर पिट्यूटरी के टोटल कितने हार्मोन हो गए? 7 है ना. मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये 6 ही दिया है. मोस्ट ऑफ द बुक्स गिवन ओनली 6, बट ये रिसेंटली नया
लिवोपोट्रोपिन, बीटा लिवोपोट्रोपिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस। नाउ जो लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है, तो लुटेनाइजिंग हार्मोन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज a glycoprotein which is having 2 सब यूनिट। इसमें क्या है, 2 सब यूनिट होते हैं, एक होता है अल्फा एंड एक होता है बीटा ना। लुटेनाइजिंग हार्मोन इज हैविंग 2 सब यूनिट अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा सब यूनिट में होता है 92 अमीनो एसिड्स, बीटा में होता है 141 अमीनो एसिड्स। तो 141 प्लस 90, आप वो देखो 92 प्लस 141 है ना। तो इसका अगर आप समेशन करोगे ना, तो आपको टोटल कितने अमीनो एसिड है वो समझ में आना। तो द हाफ लाइफ ऑफ दिस लुटेनाइजिंग हार्मोन इज 60 मिनट। हाफ लाइफ कितना है इसका, 60 मिनट। देन ग्रोथ हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन इज सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें होता है 191 अमीनो एसिड्स। ग्रोथ हार्मोन में क्या है, 191 अमीनो एसिड होता है, उसका मोलिकुलर वेट है ना 21,500 डेल्टा। तो एक बार मोलिकुलर वेट पूछा है, मोलिकुलर वेट ऑलरेडी एक बार पूछा है। मोलिकुलर वेट ऑफ ग्रोथ हार्मोन कितना है, 21,500 डेल्टा एंड टी हाफ है ना। हाफ लाइफ कितना है, 20 मिनट। मतलब हाफ लाइफ मतलब क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड टू मेटाबोलाइज और टू रिमूव द 80% ऑफ दैट हार्मोन, या 20 मिनट है। इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द किडनी एंड लिवर। ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, किडनी एंड लिवर में होता है। नाउ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगेन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन हैविंग 2 सब यूनिट। अल्फा में होता है 91, सॉरी अल्फा में होता है 92 अमीनो एसिड्स एंड बीटा सब यूनिट में होता है 118 अमीनो एसिड्स, राइट। सो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अगेन ग्लाइकोप्रोटीन हैविंग 2 सब यूनिट अल्फा एंड बीटा, 92 and 118 रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। उसका हाफ लाइफ है 3 to 4 आवर्स। प्रोलैक्टिन अगेन ए सिंगल पेप्टाइड चेन हैविंग 199 अमीनो एसिड्स, यहाँ क्या है 20 मिनट। एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH अगेन ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 9 अमीनो एसिड, यहाँ 20 मिनट। ऑक्सीटोसिन भी क्या है, पॉलीपेप्टाइड ऑफ 9 अमीनो एसिड्स, यहाँ होता है उसका 6। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स याद रखो, मॉलिक्यूलर वेट याद रखो। इसमें और भी स्कोप लगता है मुझे, और स्कोप क्या है इसमें, यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एवरी हार्मोन। से यहाँ पे 2 है ना, मैंने मॉलिक्यूलर वेट मुझे एक का ही मिला है बुक्स में, नोट्स निकालते टाइम पे तो मैंने वो लिख दिया क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। बट आपके लिए है कि यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एवरी हार्मोन, राइट। दैट इज स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, व्हेन दीज हार्मोन्स विल बी रिलीज्ड, ना। सो when the release of ACTH, adrenocorticotropic हार्मोन कब रिलीज होगा। एज आई टोल्ड यू द homeostasis is regulated by 2 mechanism. One is a nervous mechanism for short time and second one is a endocrine mechanism for long time. तो जैसे ही आपको स्ट्रेस आता है, स्ट्रेसर रिस्पॉन्स, यू गॉट अ थ्रेट इन योर लाइफ। जैसे आप कोई टाइगर देखते हो सडनली, मतलब आप घूमने जा रहे हो और जंगल में रहो, सामने आपकी टाइगर आ गया, तो दैट इज अ थ्रेटनिंग कंडीशन टू योर बॉडी। तो योर ब्रेन recognizes that threat and will try to survive. So that's why stressor or threatening stimulus, hypothalamus से immediately क्या है, hypothalamus will immediately get stimulated and will release immediately, will increase the sympathetic drive. sympathetic nervous system का जो सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है and it will release a sympathetic neurohormone known as a noradrenaline. तो immediately जैसे आप कोई थ्रेट देखते हो तो आपका
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और नॉर एड्रेनालिन रिलीज होता है सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से, दैट विल एक्ट ऑन हार्ट, इंक्रीज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, will dilate the bronchial muscle, increases the blood glucose level, decreases the digestive function. Now this is a short term response. It is either fight or flight. We have already seen in the nervous system fight or flight, but that is known as a short term response. तो जैसे ही आप कोई थ्रेट देखते हो तो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आपका मीडिएट होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्स फॉर fight or flight. But for long term period, hypothalamus will stimulate the anterior pituitary via CRH, that is a corticotropic releasing hormone. Anterior pituitary will be stimulated to produce ACTH. Adrenocorticotropic hormone will be released. It will act on adrenal cortex. The target cell क्या है इसका? Adrenal cortex. Adrenal cortex will release the, also stimulate the adrenal medulla to release more adrenaline or adrenaline short term, but for long term adrenal cortex will be stimulated and there is a release of glucocorticoids and mineralocorticoids. What are the example of glucocorticoids? We have seen cortisone, corticosteroid and cortisone, and that will increase the blood glucose level, increase the catabolism of lipid and protein, decreases the inflammatory response. ये cortisol जो होता है, cortisol, that is anti-inflammatory and also decreases the immune response. That's why जो steroids होते हैं, steroids they are used in the they are used to suppress the immunity. जो steroids drug होते हैं जैसे corticosteroids जो है ना, बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन, प्रेगनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन, these drugs they suppresses the immunity. And that's why they are used in the inflammation. Suppresses the immunity. Immunity suppress करते हैं कैसे? जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, हिस्टामाइन रिलीज होता है. So because of the suppression of immune response, so they prevent the release of inflammatory mediators and they act as anti-inflammatory. Just steroids. Now mineralocorticoids, they will be released on aldosterone. They will cause salt and water retention, increase the blood pressure and blood volume. So that is known as a long-term response. How ACTH is released. Now देखो antidiuretic hormone also known as a vasopressin. So it is a hormone of it is a hormone of posterior pituitary, है ना. तो जो posterior pituitary है ना, posterior pituitary hormones, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन. देखो आप बोलते हो नाम में क्या रखा है, नाम में रखा है ना भाई इसके एंटी मतलब क्या, अपोजिट. डायूरेटिक मतलब क्या है, डायूरेसिस मतलब क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होना या फिर यूरिन ज़्यादा बनना, यूरिन ज़्यादा निकलना, उसको डायूरेसिस बोलते हैं. एंटी डायूरेटिक मतलब क्या, ये यूरिन का डायूरेसिस नहीं होने का मतलब ये यूरिन फॉर्मेशन कम करेगा. Antidiuretic hormone will decrease the urine formation. How it will decrease the urine formation? By reabsorbing the sodium and water in the kidney, right? तो देखो increase in the sodium water reabsorption from the tubules of kidney, and that increases the blood volume, increases the blood pressure, है ना. अभी it also act on a blood vessels. blood vessel को act होके vasoconstriction करता है ना, and that's why decreases the sweating, causes the vasoconstriction, and that's why it is also known as a vasopressin. ADH antidiuretic hormone is also known as a vasopressin. क्यों? Because it will constrict the blood vessel. ये कब रिलीज होता है तो है ना, when ADH will be released when there is a decreased water content in the body, है ना, and there is one है ना अल्कोहल जो होता है, कौन सा अल्कोहल सबसे प्यारा मॉलिक्यूल है आपका. अल्कोहल इनहिबिट द
ADH secretion, याद रखो. Now another hormone from posterior part of pituitary is a oxytocin. कौन सा टोसिन? ऑक्सीटोसिन. अरे भाई कौन सा टोसिन? ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन क्या करता है? it will cause contraction of uterine muscle. तो यूट्राइन स्मूथ मसल जो होता है प्रेग्नेंट वुमन का, है ना, तो इट विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल एंड यूजफुल फॉर द डिलीवरी, राइट. तो ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल एंड आल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, है ना. तो इसका इंजेक्शन देते हैं. देखो जिसका प्रेगनेंसी है और जिसको नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है, उसका नाम है पिटोसिन. ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन आता है, उसका नाम है पिटोसिन. 0.5 ml एंड 1 ml में आता है. तो वो इंजेक्शन लगा दिया ना प्रेग्नेंट लेडी को, तो फटक से जो फीटस है वो बाहर आ जाता है. क्यों? बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्राइन मसल का और वो फटक से बाहर आ जाता है. ठीक है. तो पिटोसिन. उसके साथ में एक और एक इंजेक्शन होता है मिथर्जिन. मिथर्जिन मतलब क्या है? उसमें अपना ये अल्कोलाइड्स होता है. कौन सा? उसमें ये अल्कोलाइड्स होता है. कौन सा? हाँ, ये जो ये नाम नहीं याद आ रहा है, वो जो रे प्लांट पे डेवलप होता है अल्कोलाइड्स, वो अल्कोलाइड होता है उसमें. वो अल्कोलाइड अगेन दैट इज कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल. यूट्राइन स्टिमुलेंट है ना, नोन एज ऑक्सीटोसिक. जो यूट्राइन को स्टिमुलेट करता है, यूट्राइन मसल को स्टिमुलेट करता है, उसको एक टर्म है ऑक्सीटोसिक. देयर आर टू टर्म. देखो ऑक्सीटोसिक एक टर्म है, ऑक्सीटोसिक मतलब क्या है? दोज विच स्टिमुलेट द यूट्राइन स्मूथ मसल फ्रॉम द ऑक्सीटोसिन ओनली. ये टर्म ऑक्सीटोसिन से आया है. देयर इज अनदर टर्म नोन एज टोकोलाइटिक. ऑक्सीटोसिक मतलब क्या है? विच विल स्टिमुलेट द यूट्राइन मसल. एंड देयर इज अनदर टर्म नोन एज टोकोलाइटिक. अनदर टर्म नोन एज टोकोलाइटिक विच विल रिलैक्स. ये क्या करते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल. ये क्या करते हैं? स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल. ऑक्सीटोसिक ड्रग विल स्टिमुलेट द यूट्राइन स्मूथ मसल. जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया आपका, या फिर जो अल्कोलॉइड्स है, याद नहीं आ रहा हूँ मुझे, क्यों याद नहीं आ रहा है. अल्कोलॉइड्स विल आल्सो स्टिमुलेट द मिथर्जिन इंजेक्शन. नाम तो याद आ गया मुझे. में कभी कभी हो जाता है, मुंह से बोल जाता है. ठीक है. ऑक्सीटोसिक मीन्स दे आर दोज विच विल स्टिमुलेट द यूट्राइन मसल एंड टोकोलाइटिक मीन्स दोज विच विल रिलैक्स द यूट्राइन मसल. देन देखो दिस हार्मोन इज स्टिमुलेटेड व्हेन स्टिमुलेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस रिजल्ट्स इन द स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स. जैसे ही माँ के पेट में जो बच्चा है, जैसे सर्विक्स के पास उसका हेड आ जाता है, जैसे ही बच्चे का हेड जो है वो सर्विक्स के पास आ जाता है, सो वो सर्विक्स के मसल जो है स्ट्रेच होते हैं एंड वो स्ट्रेच का सिग्नल हाइपोथैलेमस को जाता है एंड हाइपोथैलेमस विल रिलीज द ऑक्सीटोसिन. हाइपोथैलेमस विल रिलीज द विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ऑक्सीटोसिन. और जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है सर्विक्स का एंड वो बच्चा बाहर आ जाता है. एंड देयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेस्ट मसल टू प्रोड्यूस मिल्क. देख तो नेक्स्ट इज नथिंग बट द हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स. So there are two hormones produced. There are three hormones produced by thyroid gland. So one is known as the thyroxine. Thyroxine is known as a T4. Second one is known as a triiodothyronine. It is known as a T3, and third one is known as a calcitonin. So there are three hormones produced by thyroid gland. उसका काम क्या है? Thyroxine will increase the
energy production from the all type of carbohydrate, protein, lipid, and increases the protein synthesis rate. So it is a catabolic in nature. Thyroxine is a catabolic in nature, right? And it is controlled by thyroid stimulating hormone from anterior pituitary. Then calcitonin क्या करता है? Decreases the reabsorption of calcium and phosphate from the bone to the blood. इससे आपको कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी हो गई तो आपके बोन में जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट है वो रीअब्सॉर्प्शन होता है और उसका कमी पूरा किया जाता है. बट कैल्सिटोनिन विल प्रिवेंट दैट. कैल्सिटोनिन डिक्रीजेज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन. दस कैल्सिटोनिन रिलीज कब स्टिमुलेट होता है? व्हेन यू आर हैविंग हाइपर कैल्सीमिया. Now parathyroid hormones. So parathyroid hormones will release a parathyroid hormone that increases the reabsorption of calcium and phosphate from the bones to the. तो parathyroid hormone, जो parathyroid hormone है इसके अपोजिट है. कैल्सिटोनिन के अपोजिट कौन काम करता है? parathyroid hormone. कैल्सिटोनिन क्या करता है? Decreases the reabsorption of calcium and phosphate from the bone, prevent the increase in the calcium and phosphate in the blood. But parathyroid hormone क्या करता है? Increase in the reabsorption of calcium and phosphate from the bone. So they will increase the calcium and phosphate level in the blood. Increases the calcium phosphate in the small intestine absorption. Increases the reabsorption of calcium and excretion of phosphate by the kidney. Also causes the activation of vitamin D. इसको रिलीज के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? हाइपोकैल्सीमिया स्टिमुलेट द production of parathyroid hormone, and hypercalcemia inhibit the production of parathyroid. Now hormones of pancreas. Pancreas की कितने हार्मोन्स है? pancreas है ना, pancreas is known as a both exocrine as well as endocrine gland. तो pancreas जो होता है वो exocrine भी होता है, endocrine भी होता है ना. बट एंडोक्राइन जो पार्ट है पैंक्रिया का उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक लैंग्रांस. पैंक्रियाटिक लैंग्रांस और आइलेट्स ऑफ लैंग्रांस. तो आइलेट्स ऑफ लैंग्रांस और पैंक्रियाटिक लैंग्रांस दे आर एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रिया. एंड आइलेट्स ऑफ लैंग्रांस एज अ डिफरेंट सेल्स. आइलेट्स ऑफ लैंग्रांस हैज अ डिफरेंट सेल. कितने सेल है उसमें है अल्फा सेल. आइलेट्स ऑफ लैंग्रांस ऑफ पैंक्रिया हैज अल्फा सेल, बीटा सेल्स, देन डेल्टा सेल्स, एंड वन मोर देयर इज अ पीपी सेल्स और एफ सेल्स. तो अल्फा सेल विल प्रोड्यूस अ ग्लूकागॉन दैट इज अ हार्मोन व्हिच इंक्रीजेस द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. मीन्स ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है. इट कॉजेज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ना इन द लिवर. एंड जो एक्सेस ग्लूकोज है बॉडी में उसको लिपिड्स में कन्वर्ट करता है. मतलब लिपिड सिंथेसिस. सो दिस ग्लूकागॉन इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके, अगर ग्लाइकोजन नहीं है तो लिपिड यूज करके ब्रेकडाउन करेगा लिपिड्स. एंड वहाँ से जो एसिटिल कोए बनेगा, एसिटिल कोए से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ग्लूकागॉन कॉजेज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस बट विल प्रिवेंट द ग्लाइकोलाइसिस. ग्लूकागॉन इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपोग्लाइसीमिया. अगर आपको ब्लड शुगर लेवल कम हो गया ग्लूकागॉन रिलीज होता है. नाउ इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा cells of Langerhans. Increases the glucose transport into the cell and use of utilization of glucose for energy production. तो ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. कौन सा? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. तो ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा. हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. एंड इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल कम करता है बाय इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन, बाय इंक्रीजिंग द
formation of glycogen, that is a glycogenesis by increasing the formation of lipid, है ना. अगर ग्लूकोज है आपके बॉडी में तो उसको ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा. अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है बॉडी में, है ना, जितना बॉडी के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा है, तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं उसको. एंड और भी ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो लिपिड बनेगा. मतलब बोलते ना, ज़्यादा शुगर खाया तो आपका वेट बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? बिकॉज एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज मोबिलाइज टू द लिपिड्स. एंड इंसुलिन इज सिक्रेटेड ड्यू टू हाइपरग्लाइसेमिया. जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, इंसुलिन रिलीज हो जाएगा. वो आपने ऑलरेडी देखा है डायबिटीज चैप्टर में. इफ यू हैव नॉट सीन, यू कैन गो एंड रीड, you can go and watch that lecture. Third type of cell in the pancreas is known as a delta cell, which will produce a somatostatin. ये क्या करता है? Decreases the secretion of insulin and glucagon, slow downs the absorption of nutrition, and increasing level of insulin and glucagon, they produces the somatostatin. There is one more cell known as a F cell or PP cell, which will produce a pancreatic polypeptide. हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स. हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स कौन है? अल्डोस्टेरॉन. अल्डोस्टेरॉन. कौन सा स्टेरॉन? अल्डोस्टेरॉन. सो विच इंक्रीजेज द सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी, इंक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम, है ना. एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, है ना. ये कब रिलीज होता है? अल्डोस्टेरॉन. इट इज रिलीज व्हेन देयर इज अ डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर और लो ब्लड वॉल्यूम, है ना. ब्लड खून का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा पोटेशियम है ब्लड में, बहुत ज़्यादा पोटेशियम हो गया, तो अल्डोस्टेरॉन रिलीज हो जाएगा. एंड व्हाट इट कॉजेज? इट कॉजेज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, एंड इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन. पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन बढ़ता है. पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन बढ़ता है. आयन, आयन, आयरन हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोल. तो इट इज अ कॉर्टिसोल. तो कॉर्टिसोल इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड्स एंड लिपिड फॉर द एनर्जी. जितना भी बॉडी में एक्सेस अमीनो एसिड आ गया या फिर लिपिड आ गया, उसको उसकी एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है. डिक्रीजेज द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी. ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम करता है, एक्सेप्ट इन द ब्रेन. ब्रेन में क्यों नहीं? क्योंकि ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन, ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन विच इज बेस्ट, विच इज डिपेंडेंट ऑन द ग्लूकोज फॉर एनर्जी. अगर ग्लूकोज नहीं है तो ब्रेन में एनर्जी नहीं होगा. तो देखो, जिसके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है उसको चक्कर आता है. क्यों आता है चक्कर? तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो चक्कर आता है. क्यों? बिकॉज ब्रेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्लूकोज फॉर द एनर्जी. बिकॉज ब्रेन में देर इज नो प्रोविजंस टू कन्वर्ट लिपिड इनटू ग्लूकोज, बट इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी वी हैव प्रोविजंस टू कन्वर्ट लिपिड इनटू ग्लूकोज, बट ब्रेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्लूकोज फॉर एनर्जी. जिसको चक्कर आता है उसको ग्लूकॉन डी देते. क्यों देते भाई? पागल थोड़ी है वो, उनको मालूम है. Okay, so cortisol is released when there is excess of amino acid, there is fats under the influence of adrenocorticotropic releasing hormone. It increases the conversion of glucose to glycogen in the liver. It has an anti-inflammatory activity due to stabilization of lysozyme and blocking the histamine. So it has an anti-inflammatory activity. तो रिमेनिंग पॉइंट्स विल टेक टुमारो. तो कल फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे. विल टेक टुमारो फ्रॉम दिस स्लाइड. आई होप आज का समझ में आ गया. अर्गोट अल्कोलाइड्स, हाँ करेक्ट है, करेक्ट. मैं भूल गया था, बोलिए अर्गोट अल्कोलाइड्स. तो अर्गोट अल्कोलाइड में जो अर्गोमेट्रिन होता है, सो दैट अर्गोमेट्रिन स्टिमुलेट द यूट्राइन स्मूथ मसल. तो जब भी प्रेग्नेंट लेडी होता है, जब भी उनका लेबर पेन स्टार्ट होता है, जब भी बच्चा नहीं हो रहा है नेचुरल
मतलब जल्दी डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो उसको ऑक्सीटोसिन, वही पिटोसिन इंजेक्शन होता है 0.5 mg का वो, और मिथर्जिन नाम का इंजेक्शन है, उसमें अर्गोटामाइन होता है, तो अर्गोडाल्कुलेट होता है, एंड ये दोनों मिला के इंजेक्शन लगा दिया ना, तो विद इन 10 मिनट बच्चा बाहर आ जाता है, तो फटाक से डिलीवरी होता है उसका। तो मिथर्जिन एंड पिटोसिन इंजेक्शंस दे आर यूज्ड टू इंड्यूस द लेबर, ठीक है। So we'll take a remaining part tomorrow. We'll try to ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, वो बड़ा सेक्शन है, कल एक लेक्चर फिर से एक थायराइड का लेक्चर लेंगे, है ना, उसके बाद चलता रहेगा ये लेक्चर, बंद थोड़ी होने वाला है। See you tomorrow. I hope you have understood.